Hey guys, how's it going? So today's video will be about data representation techniques. ये थोड़ा mathematical concept है. आपको अगर Boolean Algebra समझ में आ गया, this is the next chapter that you should consider. Now in this chapter we will look at a lot of mathematics. जैसे हम लोगों ने पहले decimal number system देखा होगा, हम लोगों ने अभी तक binary number system भी देख लिया. There are other number systems as well, जैसे hexadecimal number system and octal नंबर सिस्टम. सो ये चार चीज़ें हम लोग देखेंगे आज, एंड हाउ टू कन्वर्ट अ नंबर इन एनी ऑफ दीज फॉर्म्स इनटू सम अदर फॉर्म. नाउ डेटा रिप्रेजेंटेशन में अगर आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी आती है, आई वुड सजेस्ट ट्राई टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. नाउ देर आर कन्वर्जन्स अराउंड 10 to 12 कन्वर्जन्स जो आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आपको समझ में नहीं आता है तो. बट what I would suggest is go through the video a couple of times. You will be able to understand them because in the end आपको intuitively ये सब समझने लगेगा. Anyways, let's not waste any time. A quick introduction. My name is Aakash Singh. I am here to make things easier for you. And अगर आपको कभी भी doubt आ रहा है, you know what to do. You can comment under any of my videos. All right. So now let's look at what data is. आपके आसपास हर जगह डेटा है. अगर आप फोटोज़ क्लिक कर रहे हो फ़ोन से, इट इज़ स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ JPG और .png. अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हो वो MP3 के फॉर्म में होता है. अगर आप किसी से बात कर रहे हो फ़ोन पे, जो डेटा ट्रैवल होता है वो फर्स्ट बाइनरी डेटा में कन्वर्ट होता है, एंड देन वहाँ पर आपको मॉड्यूलेट करना पड़ता है. सो मेनी कम्प्लेक्स टेक्निक्स आर जस्ट बेस्ड ऑन डेटा. सो अगर आपने डेटा को सिंप्लीफाई कर दिया, अगर आप डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हो बहुत ईजीली, देन आपका जो कंप्यूटर लाइफ है, कंप्यूटर से जो भी आप काम कर रहे हो बहुत ईजी हो जाता है. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ राजेश यू स्टडिंग इन क्लास 11th. He has received 65 marks in computer science. Now each of these fields can be represented in the form of numbers. अगर आप राजेश लो, ये तो आपको ABC फॉर्म में दिख रहा है, अल्फान्यूमेरिक फॉर्म में दिख रहा है, बट इट कैन बी इवेंचुअली कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म. हाउ डू वी डू दैट, वो हम लोग देखेंगे इसी सेशन के अंदर. सिमिलरली अगर आप ये देखोगे, दिस इज़ एन इंटीजर डेटा टाइप. हाउ डू यू कन्वर्ट इट इनटू अदर डेटा टाइप्स? दिस इज़ अगेन अल्फान्यूमेरिक, न्यूमेरिक एंड अल्फान्यूमेरिक. सो डेटा कम्स फ्रॉम अ वर्ड कॉल्ड डेटम विच मीन्स अ रॉ फैक्ट. सो कोई भी आपके पास फैक्ट होगा जो आप लिख सकते हो, सुन सकते हो, देख सकते हो, दैट कैन बी कन्वर्टेड और represented as data. Now we know अगर आपके फ़ोन में या फिर अगर आपके PC में मेमोरी है, वो इस फॉर्म में होती है 8 GB, 16 GB या फिर 4 GB. What does a GB mean? So GB is nothing but it is a combined form of smaller units of डेटा. सो डेटा का सबसे छोटा यूनिट होता है बिट. बिट कैन ओनली टेक टू फॉर्म्स विच आर 0 and 1. ये हम लोगों ने बूलियन अलजेब्रा में देखा था. नाउ दीज टू डिजिट्स आर ऑल्सो नोन एज बाइनरी डिजिट्स. सो बाइनरी डिजिट्स बोलना बार बार थोड़ा लंबा हो जाता है, सो वी जस्ट कॉल देम बिट्स. नाउ एनी टाइप ऑफ डेटा कैन बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट्स. We know computer can only understand zeros and ones or on and off. So that's why कोई भी डेटा अगर आप स्टोर कर रहे हो वो इवेंचुअली आपकी हार्ड ड्राइव में 0 और 1 के फॉर्म में ही स्टोर होता है. सो हम लोगों ने देखा कि 0 and 1 के फॉर्म में जब डेटा आप स्टोर करने लगो, जब आपको कन्वर्ट बैक करना होगा तो आप कैसे करोगे. सो उसके लिए हम लोगों ने थोड़े नंबर सिस्टम्स क्रिएट किए हैं. डेसिमल नंबर सिस्टम आपको पता है आजकल जो मैथमेटिक्स चलता है, दैट इज़ बेस्ड ऑन डेसिमल नंबर सिस्टम, जिसका जो बेस है वो है 10. What does this 10 mean? It means the decimal number system has 10 digits. So it is not necessary कि कोई भी नंबर सिस्टम हो आपके पास और उसमें आप 10 ही डिजिट्स रखो. जैसे हम लोगों ने बाइनरी देखा तो उसका जो बेस है वो 2 है, which means there are only two digits. So computer scientists engineers came up with another type of number system जहाँ पर बेस वैल्यू 8 होगी और 16 होगी. नाउ वी नो डिजिट्स जो होते हैं वो 0 to 9 होते हैं, ठीक है. सो टोटल कितने डिजिट्स हुए? 10 डिजिट्स. अगर आप 10 के 10 डिजिट्स यूज़ कर रहे हो तो आप उसको डेसिमल नंबर सिस्टम बोलोगे. अगर आप उसमें से सिर्फ 2 डिजिट्स यूज़ कर रहे हो, 0 and 1, तो आप उसको बाइनरी बोलोगे. अगर आपने
8 डिजिट्स यूज किए हैं, विच मीन्स 0 to 7. दिस मीन्स देर आर 8 डिजिट्स. अगर आप 8 डिजिट यूज कर रहे हो तो उस नंबर सिस्टम को बोला जाता है ऑक्टल नंबर सिस्टम. एंड इफ यू आर यूजिंग 16 डिजिट्स, नाउ यू वुड थिंक डिजिट्स तो सिर्फ 10 होते हैं, हाउ डू यू गेट 6 more digits? सो इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम वी यूज 16 डिजिट्स, जिसमें से आपके जो 6 डिजिट्स हैं दे आर नॉट एक्चुअली डिजिट्स बट दे आर अल्फाबेट्स. So how are they represented? We will look further, but most commonly used number system is decimal number system. Now कितने आप digits use करने वाले हैं उस number system में, that is known as radix or base. So decimal number system, we all know 10 digits and it is the oldest and the most popular number system. ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ता है, it is very intuitive, naturally आपको समझ में आता है कि आपके पास 10 fingers हैं तो you can count using the decimal number system. But it is also a positional number system. Now let's rewind, go back to class 1 or probably UKG, जहाँ पर हम लोग ने units, tens, hundreds ये पढ़ा था. So let's represent any random number or not random enough. Let's just say हम लोगों ने number लिखा है 123. What does it mean? How do we know कि 100 है यहाँ पर, tens कौन सा है, units कौन सा है? So it is divided like this. सबसे पहले आता है आपका units, then tens, then hundreds. So basically it's like saying कि जो 3 की position है ये represents ones और यूनिट्स पोजिशन, बट मैथमेटिकली हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं 10⁻0 से. व्हाट डज इट मीन? कि जो भी ये नंबर है हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी पोजीशन से और पोजिशनल वेट से. सो लेट्स लुक एट नंबर 2. यहाँ पर आएगा 10⁻1. वाई? बिकॉज इट्स टेंस पोजिशन, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 10 से. एंड दिस इज हंड्रेड्स पोजिशन, तो ये रिप्रेजेंट होगा, ये पोजीशन रिप्रेजेंट होगी 10⁻2 से और हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसको फाइनली 100 से. सो दिस इज व्हाट्स बीइंग डन. यहाँ 10⁻2 था तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया इसकी नंबर से. यहाँ पर 10⁻1 था तो हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया द कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर. यहाँ पर 10⁻0 था तो हम लोग इसके यूनिट्स डिजिट से मल्टीप्लाई करके फिर देन वी सम इट एंड इवेंचुअली वी गेट द सेम नंबर which is in decimal number system. Now this is not a very unique thing. आप ये सेम चीज़ बाइनरी में भी देखोगे, ये सेम चीज़ ऑक्टल में देखोगे, ये सेम चीज़ आप हेक्साडेसिमल में भी देखोगे. So it's like this. Instead of multiplying with powers of 10, in binary number system you will now multiply with powers of 2, क्योंकि this is a binary number system जिसका base जो है that is equal to 2. सो कपल ऑफ थिंग्स टू रिमेंबर. जब भी आप कोई भी बाइनरी डिजिट लिखते हो, सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिट इन द एंटायर नंबर, इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड द लीस्ट इंपॉर्टेंट और द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज ऑन द राइट हैंड साइड. सेम थिंग गोज फॉर ऑल ऑफ द नंबर्स दैट वी नो. अगर हम लोग 123 लिखेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजिट यहाँ पर जो है वो है 1, क्योंकि इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है. It comes at 10⁻2 position, I mean hundreds position, right? So this is you need to remember. Similarly, अगर आपको इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना है, what do? You start multiplying the binary number with the weights of that number system. जैसे हम लोगों ने 1 लिया. So let's start from the leftmost digit. We start with 2⁻0, then we have 2⁻1, then we have 2⁻2, then we have 2⁻3. कभी भी आपको बाइनरी से आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू राइट द पावर ऑफ 2s एंड देन यू स्टार्ट मल्टीप्लाइंग एक एक डिजिट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड. जैसे यहाँ पर 1 था, फिर आपका 0 आया, फिर 1 आया, फिर 1. And then once you do the multiplication and addition, you will get the number in the decimal form.
ऑक्टल नंबर सिस्टम में क्या डिफरेंस है? द ओनली डिफरेंस इज इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय 2 नाउ वी स्टार्ट मल्टीप्लाइंग विद 8। कैसे स्टार्ट करेंगे? 547 है, तो सबसे पहले हम लोगों ने 8 की पावर्स लिखना स्टार्ट की। 8 रेस टू 0, 8 रेस टू 1, 8 रेस टू 2। आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया and then we get the answer as 359. I'm not doing the calculation because it's self-explanatory, but this is your decimal form. अब हम लोगों ने ऑक्टल नंबर सिस्टम भी देख लिया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. नाउ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम यू माइट थिंक इज अ बिट कंफ्यूजिंग एट द बिगिनिंग, क्योंकि यहाँ पर हम लोग डिजिट्स के बदले हम लोग अल्फ़ाबेट्स यूज़ करने लगते हैं. बट इवेंचुअली यू विल नो कि जैसे ही आपने एनकाउंटर किया 12, तो आप 12 को रिप्लेस कर दोगे सी से. अगर आपने एनकाउंटर किया 10, आप 10 को रिप्लेस कर दोगे ए से. ओके, अगेन द सेम टेक्निक. अगर आपको 25 को जो हेक्साडेसिमल में है, अगर आपको इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखना है, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? यू स्टार्ट बाय राइटिंग पावर्स ऑफ 16, बिकॉज हेक्साडेसिमल 16 की पावर्स लिखी एंड देन वी मल्टीप्लाई विद द कॉरेस्पॉन्डिंग डिजिट्स. सो ये कन्वर्जन चार्ट है. जो अगर आप देखोगे, डेसिमल इज ऑन द लेफ्ट मोस्ट साइड. दीज आर द डिजिट्स यू एक्चुअली नो. अगर आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने जाओगे ऑक्टल में एंड हेक्साडेसिमल में, सो दीज आर द नंबर्स विच यू विल एनकाउंटर. नाउ ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है. यू कैन एक्चुअली कैलकुलेट इट बाय परफॉर्मिंग द कन्वर्जन्स. So let's try to solve this. Is 786 an octal number? Octal का मतलब 8 digits. So आपको इस नंबर में 8 से ऊपर कोई नंबर दिख रहा है. 8 digits मतलब हम लोग 0 से 7 लेंगे, करेक्ट? बट यहाँ पर मुझे 8 विजिबल है, which means this is not an octal number. This is actually a decimal number. So no. Next one, is 101 a binary number? Yes, it can be a binary number because 0 and 1 use हो रहा है. It can also be a decimal number, but we do not know yet. So we can say it is a binary number. The radix of octal number is 8. Basically पूछा जा रहा है कि base of an octal number क्या होता है. So oct means 8. So base होना चाहिए 8. So this is no. Let's move on to the number system conversions. We have already seen कि अगर आपको बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो, आप कैसे करोगे, वो हम लोगों ने स्टार्टिंग में देखा. बट वी विल ऑल्सो लुक एट इट अगेन सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, अगर मेरे पास कोई भी डेसिमल नंबर है, फॉर एग्जाम्पल 183, which is a decimal number, how do I convert it into a binary number? So there is a technique for this which involves dividing this number by 2 and noting down the remainders. तो आप इस नंबर को कंटिन्यूसली 2 से डिवाइड करोगे एंड एवरी टाइम यू डिवाइड बाय 2 आप उसका रिमाइंडर नोट डाउन करोगे एंड टिल द टाइम योर नंबर रीचेज 0. जब तक आपने पूरा नंबर 2 से डिवाइड करके ख़त्म नहीं कर दिया, आप रिमाइंडर नोट डाउन करते रहोगे. सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक. लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर 65 इनटू इट्स इक्विवेलेंट बाइनरी नंबर. तो हम लोगों ने 2 से डिवाइड करना स्टार्ट किया. 32s are 64, सो 1 रिमाइंडर हो गया. 32 is divisible by 2, we write the quotient, but remainder is 0. We continue this till the last part. So end में आपके पास 2 बचेगा. 2 1s are 2, so no remainder.
and now you have all the remainders with you starting from this, this. Eventually you can also consider this part as a number, क्योंकि अगर आप एक और बार इसको डिवाइड करोगे तो आप लिख सकते हो 0 and 1. ठीक है, सो नाउ इट स्टार्ट्स लुकिंग लाइक अ बाइनरी नंबर क्योंकि आपके पास वंस एंड जीरोज है. बट ऑलवेज रिमेंबर, आपको इस डायरेक्शन में नहीं लिखना है नंबर, आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में नंबर लिखना है, बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट. तो आप नीचे से लिखोगे एंड this is how you convert a decimal number into a binary number. Looks easy, it is actually quite easy अगर आप कभी भी decimal number को convert करना चाहोगे तो. Same goes for decimal to octal conversion. जब हम लोग binary में convert कर रहे थे, we know कि binary number तो सिर्फ 0 और 1 से constitute होता है. अगर आपको 0 to 7 से चाहिए, which is an octal number, you just replace the division by 8. So what do we do? 8 8s are 64. Remainder comes out to be 1. Right? So now eventually, then we say 8 zeros are 0. Your remainder comes out to be 1. Again, you start writing it in the opposite way. And then it is converted into the respective octal number. Now you would say octal number में तो 0 to 7 digits होते हैं, यहाँ पर तो दिख नहीं रहे, but this number is in octal base because हम लोगों ने जब division किया, it is being divided by 8. It is by randomness that यहाँ पर आपको 1 0 and 1 आया. You can also try it with other digits, something like 27. Let's try it. 8 3s are 24. आपका जो रिमाइंडर आएगा वो 3 आएगा. Then 8 zeros are 0. आपका रिमाइंडर जो आएगा 3. So we can say 27 in decimals, in decimal number system, can be represented as 33 in the octal number system. Same goes for decimal to hexadecimal conversion. आपको अब 2 या 8 से नहीं, आपको 16 से डिवाइड करना है. सो लेट्स से 16 1s are 16, तो आपका जो रिमाइंडर है वो 15 आएगा. नाउ सिंस 15 कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड एज अ नंबर इन हेक्साडेसिमल सिस्टम, आपको 15 को लिखना पड़ेगा एज f. सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. आपके जो डिजिट्स हैं 10 11 12 13 14 and 15, they are represented as alphabets in the hexadecimal number system. So quite easy. Now this was all considering कि हम लोग decimal से जो हम लोग number system जानते हैं उससे किसी और number system में कैसे convert करें. But now what we have to do is we have to convert from foreign number systems like बाइनरी हो गया, ऑक्टल हो गया, हेक्साडेसिमल हो गया. तो आप इन सब को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे? सो वी हैव समथिंग नोन एज द पोजिशनल नोटेशन मेथड. इट इज़ द एग्जैक्ट सेम थिंग जो हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखी. लेट्स जस्ट रिवाइज इट. व्हाट डू वी डू इन पोजिशनल नोटेशन मेथड? वी स्टार्ट बाय राइटिंग पावर्स. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट कर रहे हैं, तो द बेस वुड बी 2. सो वी स्टार्ट बाय राइटिंग पावर्स ऑफ 2. 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, 2 raised to 3 and so on. सो अगर आपके पास कोई भी बाइनरी नंबर होगा, लेट्स से 1 1 0 1, आप हर एक डिजिट को उसके रिस्पेक्टिव पोजिशनल वेट से मल्टीप्लाई कर दोगे. And eventually, after you add everything, you will get your final decimal number. A lot of theory I know, so let's just look how you can actually calculate it. हमारे पास एक नंबर दिया गया 1 1 1 0 1 1. All right. How do we start? आपने जैसे ही नंबर देखा, आपको ये भी पता है कि आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है. सबसे पहले आप स्टार्ट कर दोगे लिखना
powers of 2. 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 3, 2 raised to 4, 2 raised to all right 2 raised to 5 and 2 raised to 6. So each of the digits corresponds to a positional power. आपने जैसे ये लिख लिया, in order to simplify आप इसको थोड़ा एक्सपोनेंशियली आंसर भी निकाल सकते हो. 32, 16, 8, 4, 2 and 1. Now you have the positional weights with you. अब आप हर एक डिजिट को उससे मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 1 into 32 plus 1 into 16 plus 1 into 8 and so on. This is the exact thing which has been given here. अब किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए इस मेथड को यूज कर सकते हो. It is also known as positional notation method. Now you might think, do we have to remember the methods for each of the conversions? So actually this is the best part. Positional notation method में आपको अगर किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम से डेसिमल में कन्वर्ट करना है, the only thing you need to do is change the base. You just need to change the radix. जैसे यहाँ पर हम लोग बाइनरी से डेसिमल में कर रहे थे. नेक्स्ट पार्ट में अगर आपको किसी और नंबर से, फॉर एग्जांपल ऑक्टल नंबर से डेसिमल नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो आप 8 को बेस बना लोगे. सो लेट्स डू द एग्जैक्ट सेम थिंग. देयर इज हाउएवर अ बिट ऑफ अ डिफरेंस. जैसे आपको बाइनरी में बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ी, बाइनरी टू ऑक्टल में आपको वो सब नहीं करना पड़ेगा. सो वेन एवर यू एनकाउंटर अ बाइनरी नंबर something like this 0 1 1 0, in order to convert to an octal number which is of base 8, right, जिसके digits होते हैं 0 to 7, तो आपको यहाँ पर 3 के ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे. very easy in binary to octal. So for example, if you do not have enough digits, what do? You just add 2 zeros in the beginning. So let's have a look how to do this. If we have a binary number like this, we create groups of 3. Why do we create groups of 3? Because in octal number, the power of 2 is 3. You don't have to remember it as such, but it will be beneficial for you अगर आपको ये याद रहे. Right? So we make groups of 3, and eventually we use the table to convert it into the respective octal numbers. So हमारे पास octal digits हैं, हमारे पास binary equivalent भी है. So we just represent each of these groupings as the respective octal numbers, and then we finally write our octal number. I hope everything is clear till this part. अगर आपको कभी भी इंटर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो you just group them together. Same goes for octal to decimal conversion. कैसे आप करोगे? So octal is what? Octal is base 8, decimal is base 2, and we have a number with us. So 1, 2, 6, 5. So please remember, every time you need to convert a foreign number system into a decimal number system, you need to multiply each of the digits by the powers of the foreign number system. जैसे 8 raised to 0, 8 raised to 1. And then you perform the calculations. And finally, you get your decimal number, which is 693 in this case. Again, if you find this confusing, just look at the conversion you need to make. आप उसको थोड़ा simplify करो by writing which base needs to be converted into which base. अगर आप decimal में convert कर रहे हो, always multiply with the base of the foreign number system. Now we have two foreign number systems, जैसे octal to binary. Again, so what do we have to do? We have to group them. So we have a number like this, 6213.
हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है. सो ईच ऑफ दीज नंबर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज बाइनरी नंबर्स. सो आपको इसके लिए टेबल को रेफर करना पड़ेगा. टेबल के अकॉर्डिंग ईच ऑफ दीज डिजिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय these binary numbers and you just group them together. It is very easy. No need to calculate anything. आपको एग्जाम में टेबल दिया जा सकता है इसके लिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए. Again, what do we have? A base of 16 is converted to base of 10. So since decimal में convert करना है, you start by writing the powers of 16 and you multiply by the respective numbers. यहाँ पर आप f को multiply नहीं कर सकते हो, so you have to represent f by its digit which is 15. So आपने calculations जब perform की, सबको add किया, you will get a number 607. This is how you convert from base 16 to base 10. Base 16 to base 2 which is binary. Again binary भी convert करने के लिए आपको क्या करना है, आपको groupings करनी है. So हमारे पास है 8 B C. What do? We represent each of the numbers by their binary equivalents. We group them together and we get our final binary number. So with this we have looked at all of the conversions which are actually possible. Now looking at multiple conversions in a single video, in a single session, it might be a bit confusing for you. When I started to learn the decimal conversions, the hexadecimal conversions, it took me probably a week to get used to it. So give yourself some time. थोड़ा practice करो, look at the previous year questions, or maybe just take random digits on your own. For example, like saying 101, 111, 01. Now ये जो binary number मैंने create किया है, how can I convert this into a decimal number system? Challenge yourself with random questions, but this is how the conversion takes place. Not very difficult. अगर आप समझो कि पावर्स क्यों यूज हो रही है, पावर ऑफ 2 क्यों यूज हो रही है, पावर ऑफ 8 क्यों यूज हो रही है, you will be able to solve it. So with this we have completed the data conversion part. Now let's quickly look into encoding schemes. So in the world there are 7 continents. इन 7 कॉन्टिनेंट्स में से 5 कॉन्टिनेंट्स पे पीसी पार्ट्स बनते हैं, कीबोर्ड्स बनते हैं, मॉनिटर्स बनते हैं, सीपीयूज बनते हैं. एंड ईच ऑफ दीज कॉन्टिनेंट्स हैव देयर ओन लैंग्वेजेस, राइट? जैसे एशिया में चाइनीज़, रशियन कीबोर्ड्स बन सकते हैं, अमेरिका में इंग्लिश कीबोर्ड्स बन सकते हैं, यूरोप में स्पेनिश और फ्रेंच कीबोर्ड्स बन सकते हैं. सो ऑल ऑफ दीज कीबोर्ड्स हैव डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स, have different kind of digits. But जब आपको एक कीबोर्ड से दूसरे कीबोर्ड में कोई भी लैंग्वेज कन्वर्ट करनी हो, फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर राइटिंग अ इन हिंदी, इट शुड बी इक्विवेलेंट टू ए इन इंग्लिश, राइट? सो जब आप ये कीबोर्ड से कन्वर्जन करते हो, ये कन्वर्जन के लिए आपको एनकोडिंग स्कीम्स यूज़ करनी पड़ती हैं. हाउ डू वी यूज़ एनकोडिंग स्कीम्स? सो दिस अ विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नंबर which is universally accepted, and that number is also mapped to English A. So this is the basic meaning of encoding schemes. So it is a method of converting text input to binary values. जैसे मैंने यहाँ पर number बोला, it can be a binary value. Generally it's a binary value, but it can also be decimal numbers, hexadecimal numbers. No need to get confused about it. Just remember, जब भी आप कीबोर्ड पे टाइप कर रहे हो, जो आपको वर्ड दिख रहा है स्क्रीन पे, दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय नंबर बिहाइंड द स्क्रीन. ऑल ऑफ द कैरेक्टर्स जो आप लिखते हो, दे हैव यूनिक न्यूमेरिक वैल्यूज which are generally in binary digits. So these binary values can be eventually converted into their original characters, or they can also be converted into a different language. सो एनकोडिंग स्कीम्स काफ़ी टाइप्स की होती हैं. एक अमेरिकन एनकोडिंग स्कीम है, अगर आप देखोगे उसमें तो 65 नंबर रिप्रेजेंटेड बाय ए, 66 जो नंबर है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बी. अगर आप स्मॉल ए देखोगे
So that is represented by 113. This type of table was created by American users. So it is also known as American Standard Code for Information Exchange. It is pronounced as ASCII. सो वेरियस फॉर्म्स होते हैं, आप 7 बिट में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो. 7 बिट्स मतलब 2⁻7 आप नंबर्स इस पे लिख सकते हो. 8 बिट का मतलब है आप 2⁸8 कैरेक्टर्स लिख सकते हो. दीज आर अ बिट टेक्निकल डिटेल्स, बट एनकोडिंग स्कीम्स में आपको क्या याद रखना है? द डेफिनेशन. व्हाट डू एनकोडिंग स्कीम्स डू? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनकोडिंग स्कीम्स आर देयर इन योर सिलेबस? वन इज अमेरिकन, वन इज इंडियन. नाउ ऑब्वियसली अमेरिकन लोग देवनागरी स्क्रिप्ट को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे. वी हैव टू डू इट ऑन आवर ओन. सो दैट्स व्हाई इंडियंस केम अप विद ASCII, विच इज़ इंडियन कोड ऑफ राइटिंग द कैरेक्टर्स. इसमें आप इंडियन की देवनागरी जो लिपि है वो आप रिप्रेजेंट करते हो, बट ऑल्सो और सम रोमन ट्रांसक्रिप्शन. इसमें 8 बिट एनकोडिंग यूज होती है, विच मीन्स 2⁸8 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हो. सो जैसे ASCII है, इंडियन कोड है, बट दे आर वैलिड इन द रिस्पेक्टिव कॉन्टिनेंट्स, राइट. अगर आपको ऑल ओवर द वर्ल्ड एक सिंगल एनकोडिंग स्कीम यूज करनी है, उसके लिए आप यूज करते हो UTF, विच मीन्स यूनिकोड एनकोडिंग स्कीम. सो ईच ऑफ द लेटर्स, ईच ऑफ द कैरेक्टर्स आर represented by bits. Now these bits are binary numbers. जैसे अगर आप A को देखोगे, वो अमेरिकन स्टैंडर्ड में आई गेस इट वाज 61 और समथिंग, बट जब आप उसको बिट्स में रिप्रेजेंट करोगे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दीज बिट्स. देयर आर मल्टीपल यूनिफॉर्म एनकोडिंग स्कीम्स, बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन देम इज कि कौन सा एनकोडिंग स्कीम कितने डिजिट स्टोर कर सकता है. जैसे 8 सबसे कम स्टोर कर रहा है, 16 वाला 16 डिजिट स्टोर कर रहा है, 32 वाला 32 डिजिट स्टोर कर रहा है. As you increase the number, तो number of characters which you can store, which you can convert, also increases. It's like saying कि मेरे पास 128 GB की पेन ड्राइव है और मेरे पास 512 GB की पेन ड्राइव है. किसमें ज़्यादा आप डेटा स्टोर कर सकते हो? ऑब्वियसली ज़्यादा स्टोरेज वाला. So this was about encoding schemes. A couple of questions to make you realize कि आपको questions कैसे पूछे जा सकते हैं. The number 158 in the decimal number system can be converted into hexadecimal number system as hexadecimal मतलब 16. Start multiplying by dividing by 16. So 16 tens are 160. So से just 2 digit पीछे है, तो we can say 9s are, I guess 16 9s are 144. So this should leave a remainder of 14. And then again we start by dividing 16 zeros are. We have a remainder 9. Always top to bottom, from the most significant digit to the least significant digit. तो आपका नंबर क्या है? 9 and 14. बट 14 को आप अल्फ़ाबेट में रिप्रेजेंट करोगे, आई गेस इट इज़ E. सो योर फाइनल नंबर इज N9E. Suddenly we have a question from Boolean Algebra. Let's try to solve it. Draw the logic circuit for Boolean expression. So first of all, we need to see how many gates are there. This is 1 gate, this is 2 gates, we have 3 gates. Okay, so the first gate हम लोग जो consider करेंगे वो है OR gate. OR gate is represented by this. ठीक है, OR gate के जो inputs हैं वो 2 आ रहे हैं. कहाँ से आ रहे हैं inputs? The first is our input A. But the second input, it is actually coming from an AND gate. AND gate जो है B और C के बीच में. So let me try to okay. So यहाँ पर हम लोगों ने B भी लिख दिया, यहाँ पर हम लोगों ने C भी लिख दिया. So B and C. But if you notice, there is a not sign. So what do? We just add a not gate. I'm representing it as a circle.
एंड देन इवेंचुअली ये रिप्रेजेंट हो रहा है आपका इससे. नाउ वी हैव अनदर OR गेट which takes two inputs, one from here and the other input is A, B, AND. So what do? We need to have an AND gate which is also a NOT gate. इसको invert किया गया, so that this is the input. We take the input from here. We don't draw it again. फिर से ये नहीं draw करते हैं, हम लोग के पास input already है, so वहीं से हम लोग wire खींचते हैं. And then also again taking from B. So this would be represented as A plus BC and this would be represented as AB and then we get the final answer. You can simplify it on your own. Using the algebraic method, prove that. Okay, so you can take it as your homework. You can solve it on your own, but the answer should match this. Similarly, this is a question which was asked in 2016. इन सारे नंबर्स में कोई दो डिजिट्स ऐसे हैं, दो नंबर्स ऐसे हैं जो सिमिलर हैं. सो व्हाट कैन यू डू? यू कैन कन्वर्ट ऑल ऑफ देम इनटू अ सेम नंबर सिस्टम. अगर आपने सारे नंबर्स को सेम नंबर सिस्टम में कन्वर्ट किया एंड इवेंचुअली इफ यू कंपेयर देम, आपके पास दो नंबर्स आ जाएंगे जो सेम है. यू जस्ट हैव टू मार्क दोज एज द आंसर. ऑल राइट, सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड टुडेज सेशन. आई होप you were able to understand this. A lot of calculations were present, but if you practice them, you will be able to solve any of the questions because इससे आपको ज़्यादा complicated questions नहीं पूछे जा सकते. All right, I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.